Good morning. In today's video, we discuss about the biogas plant. So how the biogas is obtained by the setup of fixed dome type, and there are two types of the biogas plant. One is the fixed dome type, and another one is the floating gas type of the biogas. So basically, in the video, we discuss about the generation of the methane gas. Basically, our main constituent in the biogas is methane gas. It is up to 65% of the methane gas generation. So here the biogas is a clean and efficient fuel. It is no human hazardous, it is very clean and it is human friendly. Now it is a mixture of methane. बेसिकली अगर हम बायोगैस में कंपोजिशन देखें डिफरेंट गैसेस का, इसमें मीथेन है, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, एंड जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बायोगैस का, दिस इज द मीथेन अप टू 65%. Now this is the working of overall the biomass and biogas. बेसिकली बायोमास जो है वो जितने भी वेस्टेज होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल का वेस्ट हो गया, हमारा एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया, एंड जो भी क्रॉप्स वेस्ट है, इन सबको हम बायोमास को हम एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसका बायोकेमिकल कंपोजिशंस, जैसे कि अगर कोई फूड है, अगर हम कुछ दिनों तक बाहर उसको छोड़ देते हैं तो देखते हैं देयर आर सम फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया डेवलप्ड इनसाइड. So the same process occurs in the organic waste, in the crop waste. The wastage goes to the plant and the anaerobic digestion process so that we found a gas and the electricity is to be obtained. But in the biogas, the main element, or we can say that our main material is the cow dung. We use the cow dung and obtained by this dung for the generation of the biogas. Now, production of biogas. The biogas plant, there are two types of biogas plant in uses for the production of biogas. These are fixed dome type of biogas plant and the floating gas holder type of biogas plant. There are two types, one is fixed dome type and another one is the floating gas holder type. Now, fixed dome type biogas plant. इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, द फॉर्म्स ऑफ द बायोमास लिस्टेड में बी यूज अलॉन्ग विथ वाटर. बेसिकली जो भी हमारा वेस्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि जो काऊ का डंग है उसके साथ हम वाटर की मिक्सिंग कर देते हैं, जिसके थ्रू कि प्रॉपर वाटर और जो हमारा काऊ डंग है वो मिक्स हो, एनिमल का डंग, पोल्ट्री वेस्टेज, प्लांट वेस्ट, ग्रास, weeds, human extras, industrial waste, sawdust, waste from food processing industries, domestic waste, vegetable peels, waste food materials. Construction. The construction for the biogas plant is the following five sections. One is the mixing tank, another one is the inlet tank, digester, outlet tank, and overflow tank. Mixing tank क्या है? Present above the ground level. Ground level से ऊपर हम mixing tank को रख देते हैं. Inlet tank, the mixing tank opens underground into a sloping inlet chamber. Digester, the inlet chamber opens from below into the digester, which is huge tank with a dome like ceiling. The ceiling of the digester has an outlet with a valve for the supply of biogas. Outlet time, the digester opens from below into an outlet chamber, and overflow time, the outlet chambers open from the top into a small flow chamber. Now, working of fixed dome type biogas plant. The various form of biomass are mixed with an equal quantity of water in the mixing tank. जैसे कि जितना भी हमारे पास काउ डंक है उतना ही उसी अमाउंट में हम वाटर को मिक्स करेंगे एंड इसको हम बोलते हैं स्लरी. द स्लरी इज फेड इनटू द डाइजेस्टर थ्रू द इनलेट चैम्बर. स्लरी को हम फेड करते हैं डाइजेस्टर इनलेट चैम्बर में. व्हेन द डाइजेस्टर इज पार्शियली फिल्ड with the slurry, the introduction of slurry is stopped and the plant is left unused for about 2 months. During these 2 months, anaerobic bacteria present in the slurry decomposes or ferments the biomass in the presence of water. As a result of anaerobic fermentation, biogas is formed which starts collecting in the
dome of the digester. Now, as more and more biogas start collecting, the pressure exerted by the biogas forces the spent slurry into the outlet chamber. From the outlet chamber, the spent slurry overflows into the overflow tank. The spent slurry is manually removed from the overflow tank and used as a manure for plants. The gas valve connected to a system of pipeline is opened when a supply of biogas is required. To obtain a continuous supply of biogas, a functioning plant can be fed continuously with the prepared slurry. So here the process is that how the biogas is to be generated. In this process, that the biogas is to be obtained by the process, we mix the cow dung with water and put for 14 to 15 days into the digester tank. We know that slowly there are some bacteria formation occurred in the tank, and after 14 days we found that the gas automatically formed and some of the hydrogen sulfide, nitrogen sulfide and carbon dioxide, some other gases also be formed by through the digester tank, but mainly our methane gas is to be obtained by the digester tank. This is the figure of the fixed dome type biogas plant. इस फिगर में हम देख सकते हैं, this is the biogas plant figure. Dung and water mixture is placed inside this. In here we can see that dung and water mixture, inlet chamber, this is the inlet chamber. In this slurry of cattle dung and water goes into this side. Slurry जो है और वाटर है और कैटल का डंग है, इस साइड में भेजते हैं. दिस इज द मिक्सिंग टैंक. ये प्रॉपर मिक्स कर लेता है, ग्राउंड लेवल में ये जाता है और फिर यहाँ पे ये नीचे जा रहा है. दिस इज द इनलेट चैम्बर. हियर दिस इज द आउटलेट चैम्बर. जब ओवरफ्लो होगा तो इसके रास्ते ये बाहर हो जाएगा, ये पूरा सील होगा. अब ये जो है वो इस यू टाइप का है, रिवर्स यू. इसी को हम बोलते हैं डोम टाइप. यहाँ पे हम एक पाइपलाइन लगा देते हैं जिसके थ्रू हम गैस जब रिलीज होगी आफ्टर 14 to 15 डेज, तो इसी पाइपलाइन के थ्रू हम गैस को आउटफ्लो कराते हैं. दिस इज द स्लैब कवर. सो दिस इज द स्कीमेटिक फिगर ऑफ द फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट. Now, advantage of fixed dome type biogas plant: requires only locally and easily available material for construction. जो easily available material for construction है वही जो है वो बायोगैस प्लांट है. इनएक्सपेंसिव, बहुत कम इसमें कास्ट हमारा इस्तेमाल में आता है, और इजी टू कंस्ट्रक्ट, इजी जो है उसका इंस्टॉलेशन है. तो हम इसको लोकल कहीं पे भी इसका सेटअप लगा सकते हैं, और जो काऊ का डंक है इट अवेलेबल ईजिली इन ईच प्लेसेस. नाउ फ्लोटिंग गैस होल्डर type of biogas plant. The construction of the floating gas holder type of biogas plant. One is the mixing tank, second is the digester tank, then two long cement pipe. One is the inlet pipe opening, another one is the outlet pipe opening, then gas holder, and in the last that is the overflow tank. The floating gas holder type of biogas plant has the following chambers sections. First, mixing tank, present above the ground level. Digester tank, deep underground, well-like structure. It is divided into two chambers by a partition. Well in between, it has two long cement pipe. First is inlet pipe opening, another one is the outlet pipe opening. Into the inlet chamber for introduction of slurry, outlet pipe opening into the overflow tank for removal of spent slurry. Gas holder, an inverted steel drum resting above the digester. The drum can move up and down, float over the digester. The gas holder has an outlet at the top which could be connected to gas stove. Overflow tank, present above the ground level. This is the floating dome type biogas plant. In the ground level, inlet chamber, dung and water mixture, underground digester tank, slurry of cattle, dung and water, floating dome, gas valve, outflow for biogas, sludge, and this one is the floating dome type biogas plant.
Now working. Slurry. Mixture of equal quantities of biomass and water is prepared in the mixing tank. The prepared slurry is fed into the inlet chamber of the digester through the inlet pipe. The plant is left unused for above 2 months and introduction of more slurry is stopped. During this period, anaerobic fermentation of biomass takes place in the presence of water and produces biogas in the digester. Biogas being lighter rise up and starts collecting in the gas holder. The gas holder now starts moving. So the basically the working of the float type बायोगैस प्लांट द मिक्सचर ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ बायोमास एंड वाटर. हम यहाँ पे बायोमास जो है उसको और इसकी इक्वल अमाउंट ऑफ बायोगैस को कलेक्ट कर रहे हैं. बायोमास एंड वाटर. द प्रिपेयर्ड स्लरी is fed into the inlet chamber of the digester through the inlet pipe. The plant is left unused for about 2 months and introductions of more slurry is stopped. तो हम प्लांट को सारा सेटअप में जो हमारा मटेरियल है और वाटर को मिक्स करके 2 मंथ के लिए छोड़ देते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड anaerobic fermentation of biomass takes place in the presence of water and produces the biogas in the digester. 2 महीना हम लोग छोड़ देते हैं जिसकी वजह से एनोरोबिक फर्मेंटेशन की फिनोमिना हो और बायोगैस जनरेट हो. बायोगैस बीइंग लाइटर rises up and start collecting in the gas holder. The gas holder now starts moving up. The gas holder cannot rise up beyond a certain level. As more and more gas starts collecting, more pressures begin to be extended on the slurry. The spent slurry is now forced into the outer chamber from the top of the inlet chamber. When the outlet chamber gets filled with the spent slurry, the excess is forced out through the outlet pipe into the overflow tank. This is later used as manure for plants. The gas valve of the gas outlet is opened to get a supply of biogas. Once the production of biogas begins, a continuous supply of gas can be ensured by regular removal of spent slurry and introduction of the fresh slurry. The disadvantage of the floating gas type biogas plant. It is quite expensive. Steel drum may rust, requires regular maintenance. Advantage of biogas as a fuel: high calorific value, clean fuel, no residue produced, no smoke produced, non-polluting, economical, can be supplied through pipelines, burns readily, has a convenient ignition temperature. So these are the main advantage of a biogas as a fuel. Its calorific value is high, clean fuel, no residue produced, no smoke produced, non-polluting, economical, can be supplied through pipelines, burns readily, has a convenient ignition temperature. Now, use of biogas. Domestic fuel for street lighting, generation of electricity. If compressed, it can replace compressed natural gas for use in vehicles. So the following uses of the biogas: the domestic fuel for street lighting, generation of the electricity. If compressed, it can replace compressed natural gas for use in vehicles. Applications. The बायोगैस बस सूडान जो है वो बायोगैस के थ्रू मूव करती है. स्वीडन में जो बस है, द बायोगैस ट्रेन ऑल्सो बी देयर इन सूडान विच मूव थ्रू द बायोगैस. सो वी मेक ए बायोगैस, biobus, biotrain, so it uses into the vehicles. Advantage of biogas plant: reduce burdens on forest and fossil fuels. जैसे कि बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ जो है वो होता है
और जो बर्डन है फॉरेस्ट पे बहुत सारी लकड़ियों को इस्तेमाल में लाया जाता है फ्यूल को बर्न कराने के लिए, कोल का इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ द बायोगैस प्लांट, बिकॉज जो घरों में पहले खाना बनता था वो लकड़ियों पे भी बनता था, इसका रिप्लेसमेंट है वो गैस के थ्रू हो गया है। तो बहुत सारी जो लकड़ियाँ हैं इससे हमारी बचती हैं, और जो फॉसिल फ्यूल्स है उस पर भी हमारा कंट्रोल है। प्रोड्यूसेस ए क्लीन फ्यूल हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पॉपुलेशन, एयर पॉल्यूशन। क्लीन फ्यूल हमको मिलता है जिससे कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट रिच नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मैन्योर फॉर प्लांट्स, कंट्रोल्ड वाटर पॉल्यूशन बाय डिकम्पोजिंग स्वेज एनिमल डंग एंड ह्यूमन एक्सेट्रा। Limitations of biogas plant. Initial cost of installation of the plant is high. Number of cattle owned by an average family of farmers is inadequate to feed a biogas plant. Generally जो हम बायोगैस प्लांट की डिज़ाइन करते हैं उसका जो डिज़ाइन प्रोसीजर है वो ये है कि जिस साइज़ में हमको बायोगैस प्लांट की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि एक घर में 6 लोग हैं और उन 6 लोगों का सुबह से लेकर शाम तक 2 टाइम का लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग का, नाइट का डिनर, तो पूरा जो कंजप्शंस जो है नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से पर डे कितना गैस जो है वो कंज्यूम हो रही है, उसके हिसाब से हम एक पर मंथ या कैलकुलेशन कर देंगे कि हाउ मच द रिक्वायरमेंट ऑफ द गैस रिक्वायर्ड इन ए मंथ फॉर 6 मेंबर इन ए फैमिली। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके वो हम सेटअप बनाएंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस वी हैव टू रिक्वायर। Now, the recent developments in the area of the biogas and biomass generation, the many benefits of the biogas, it is starting to become a popular source of energy and is starting to be used in the United States more. On 5th October 2010, biogas was injected into the UK gas grid for the first time. As of September 2013, there are about 130 non-switch biogas plant in the UK. Germany is Europe's biggest biogas producer and the market leader in biogas technology. To create awareness and associate the popular to create awareness and associate the people interest in biogas, the Indian Biogas Association was formed. India's Ministry of New and Renewable Energy offers some subsidy per model constructed. Conclusion. Biogas is a clean source of energy. Biogas plants have been in operation for a long period of time, especially in rural areas around the globe. The research organization should focus on newer, efficient, low-cost designs. The government can play important role by introducing different legal frameworks, education schemes, and the availability of technology, and simultaneously creating more awareness and providing more subsidies. Okay, thank you.